So student, you can understand what is a small business and what are the government support to the development of small scale enterprises in India. You all know that small scale enterprise are started, and the person who is running this enterprise is known as the entrepreneur. And what is entrepreneurship development? The process of development of entrepreneur is known as the entrepreneurship डेवलपमेंट मीन्स अगर आप कोई बिजनेसमैन में स्किल्स डेवलप करते हो, उसको ट्रेनिंग देते हो, उसमें नॉलेज बिजनेस के लिए नॉलेज डेवलप करते हो, देन इट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. So what is entrepreneurship development? It is the process of improving the skills and knowledge of entrepreneur through various trainings and classroom program. Means आप कोई entrepreneur है, कोई businessman है, उसको आप और अच्छे तरीके से सिखाते हैं. इसको means it is a process of development of skills in the entrepreneur so that he can do the business very well, he can do the business efficiently. Now what are the need for entrepreneurship? Entrepreneurship की जरूरत क्यों है? फर्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जितने ज्यादा हमारे कंट्री में एंटरप्रेन्योर होंगे, जितने ज्यादा बिजनेसमैन होंगे, उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उतनी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, एंड इट विल कंट्रीब्यूट टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑल्सो, एंड जीडीपी ऑफ द कंट्री विल इंक्रीज. नाउ कैपिटल फॉर्मेशन, सिर्फ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि स्मॉल स्केल एंटरप्राइज के बढ़ने से ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन भी होगा. देन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. If there are number of small scale enterprises are started in India, and entrepreneurship development will be more and more entrepreneurship development will takes place. So in this way the employment generation will be there. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा, because in our country basically the people wants to work in rural of the rural areas, wants to work in small scale enterprise because they are not so much educated, they are not skilled, so they get work easily in small scale enterprises. Generation of business opportunities for others. If we are developing more entrepreneurs, so it will generate the opportunities for development of others also. Like अगर हम एक एंटरप्रेन्योर है, वो 10 लोगों को काम देता है, तो इस तरह से सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही नहीं बढ़ता, बल्कि लोगों में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती है. मीन्स दूसरे पर्सन भी एनकरेज होते हैं, सो दैट दे आल्सो बिकम्स एंटरप्रेन्योर. इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एफिशिएंसी. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से एफिशिएंसी बढ़ती है, बिजनेस करने की क्वालिटीज बढ़ती है, एंड इट विल इंक्रीज द इकोनॉमिक एफिशिएंसी आल्सो. नाउ इंक्रीजिंग स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आल्सो राइजेस. ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी. सो दिस इज द नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया. इसी जितना ज्यादा एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट होगा, उतनी ज्यादा हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, उतना ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगा, उतनी ज्यादा जीडीपी बढ़ेगी. Now what is the characteristic of entrepreneurship? A good entrepreneur must have the following characteristics. कोई पर्सन अगर बिजनेसमैन बनना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो उसमें क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है. फर्स्ट इज सिस्टमेटिक एक्टिविटी. Entrepreneurship is a systematic activity that the work of entrepreneur will be going on systematically. That is, it will be a continuous process and it is a systematic process. इसमें जो काम होता है वो एक के बाद एक प्रॉपर सीक्वेंस में होता है. It is a lawful and purposeful activity. The process of entrepreneurship development is a lawful and purposeful activity. मीन्स एक कुछ important purpose के लिए, object के लिए entrepreneurship बनाई जाती है, and also it is lawful, it is legal, it is not an illegal activity. Related to innovation. Entrepreneurship development is a process of development related to the innovation. जितना ज़्यादा entrepreneurship development होगा, उतनी ज़्यादा innovations बढ़ेंगी, उतनी ज़्यादा goods and services बढ़ेंगी. So these are the following characteristics of entrepreneurship. So students, you can understand what is entrepreneurship development. Entrepreneurship development is the skills development or the process of development of skills in a person so that he will become a good entrepreneur, he will become a good businessman, and he can start his own enterprises, small scale enterprises, and he can help in the development of the economic development of the country, social development of the country, and also the increasing the GDP of the country. So the future of small scale business enterprise in India is very bright. If you are having a number of small scale industries, so it will help in the process of industrialization. And not only industrialization, we are having a number of commodities in our country, and we don't have to depend on other countries. And also it will helpful in the rural development and the economic development of our country. Not only rural areas and backward areas of the countries are developed, but the development of countries is also possible.
So if we want to think about the balanced regional development, so that each and every part of country should be developed, and this will be possible only with the number of small scale enterprises development in India.